Good morning, everybody. I think we're just going to start this next session or this next panel on looking at violence against Dalit women and the kind of context and challenges perhaps that we are facing. I don't know. I think I have about 10 minutes or 15 minutes. Okay. I don't think so that. First of all, I'll just introduce myself. My name is Asha, and I represent the All India Dalit Mahila Adhikar Manch, which is a campaign, kind of an organization which looks at promoting rights of Dalit women across different states. We have a small office here in Delhi, but otherwise most of the work is in the states, following up on cases of violence, looking at access to resources and justice. So I'm really happy to be here, and it's so nice to see the room full on a Sunday morning, and it clearly shows that people here are with a strong commitment for gender justice and looking at how we can break these barriers that different groups of women are facing. I am not a lawyer, neither am I kind of an academician otherwise. But I can only share some of our experiences of the activists who have been working with the communities, specifically the Dalit communities, and the kind of situation faced by women, particularly cases of sexual violence. To begin with, I don't think so that this group that is sitting here really needs a kind of an introduction or an orientation about how caste operates in our country, and I don't think so. Am I right? Yeah. I think everyone here knows that. I don't think that there's anything in our lives that can be looked at or analyzed without caste. You name it, whether it's education or housing or access to health or anything. अच्छा. ओके, मैं कह रही थी कि शायद ही कोई इस रूम में है जो हमारे समाज में जो जाति की व्यवस्था है उसकी जो उस व्यवस्था की जो इम्पैक्ट है शायद हम सब लोग जानते हैं। वो हर क्षेत्र में होगा, जो आप एजुकेशन लेंगे, हाउसिंग लेंगे, लैंड जो भी है, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ क्या हम कौन सा खाना खाते हैं, किससे हम प्यार करते हैं, किससे हम शादी करते हैं, इवन दैट इज ऑल्सो डिटरमाइंड by the realities of caste in our country, and it's so deeply stratified communities that we are living in. So friends, definitely then access to justice and the implementation of laws and policies are also not devoid of this system of caste. जब सब कुछ हमारे देश में और हमारे जिंदगी में जाति व्यवस्था से अफेक्टेड है, तो डेफिनेटली जो न्याय, एक्सेस टू जस्टिस और जो न्याय पाने की जो प्रक्रिया है वो भी जाति व्यवस्था से पीड़ित है. आई थिंक सो, आई कैन से दैट, एंड फॉर दैट वी हैव not one or two or three
evidences or what you say proof. There are so many studies. There is no dearth of evidence anymore to say that caste is a severe barrier to justice, particularly for women belonging to marginalized communities, and in this case the scheduled caste communities, and mostly the women. We have seen, we can probably share later the proper printed publications which really talk about different levels of barriers that we are facing, right from filing the cases right up to the conviction level. मेरे साथी जो यहाँ पर है, सविता is here, मनीषा is here, सभी जो हमारे हर एक केस के पीछे इतने समय बिताया है, वो खुद बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से लेवल्स में हमारी महिलाओं को इवन केस पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के लिए भी मुश्किल है, उसके बाद केस दर्ज करना, उसके बाद उसका जो प्रक्रिया करना, वो कितना हर एक स्टेप पे कितना मुश्किलें वो फेस करते हैं. But friends, what is important to understand here is that this, what I'm just talking generally about barriers to justice, what we have seen is there's an active collusion between all of the people involved in this scenario. यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग, वो एक या दो व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था है वो किस तरह एक दूसरे से लिंक है, और वो पूरा कोल्यूशन जो है वो उस विक्टिम या उस सर्वाइवर या फिर उस फैमिली के खिलाफ कैसे चलती है. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग फ्रॉम द विलेज वेयर जहाँ पर क्राइम हुआ है या फिर कोई रेप हुआ है या जो वायलेंस हुआ है, वहां से अगर आप देखेंगे जो उस दलित कॉलोनी या बस्ती या टोला से जब हम पुलिस स्टेशन तक जाना है, वो डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, बिकॉज उससे पहले ही बैरियर्स आ जाते हैं जहां पर जो दबंग कम्युनिटी से प्रेशर है या इंटिमिडेशन है. सो बेसिकली फॉर द immediate, the first thing we will think is that we should go and file a FIR, but for us it is actually we have to cross this upper caste dominant pressure, then only we can probably reach the police station, and then begins the whole thing. So that's the stage one. Then the police, then the doctors, then the investigation officers, then the SP, DC, जो भी है, all, then the local leaders, all those who are in collusion, the local political party pressures, within the different caste communities that exist in the village, there's so much of dynamic. They come in. So finally, at the end of it, when you do an analysis of all the stakeholders that are involved over there, each and every one is working hand in hand, either for political power or either for money, compromising or whatever. But ultimately, all of these actions are being done to save the perpetrator and further victimize the girl in question. मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चित्र में जो आप जो भी लेंगे, परपेट्रेटर से होंगे, डॉक्टर होगा, डीसी होगा, एसपी होगा, लोकल वहाँ के लोकल राजनीतिक लीडर्स होंगे, या फिर कास्ट जाति के लीडर्स होंगे, या फिर वो जो दबंग कम्युनिटी के लीडर्स होंगे, सभी लोग मिलकर ये एक ही प्रयास है कि जिन्होंने ये कांड किया है उनको कैसे फ्री किया जाए, और जो लड़की के ऊपर वायलेंस हुआ है और भी फर्दर विक्टिमाइज हो. दिस इज द सिचुएशन वी हैव ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर, वेदर इट इज इन बिहार, वेदर इट इज इन हरियाणा, वेदर इट्स इन मध्य प्रदेश और any place. Finally, at the end of it, we are left with battling all of these actors in this whole scene, and there comes the whole question of how do we move forward to actually get justice. This is the reality situation, I would say, for Dalit women who are really struggling to get this SC/ST Prevention of Atrocities Act. One section, one case somewhere to really take it forward fully, that itself is a huge challenge. 25 years old this act is, and we know the kind of implementation on the ground. But I want to quickly go to my next point, which is actually really about
what next, really what next? Because as a campaign organization, as an activist organization, we are all a network of activists, women, volunteers, students, some lawyers. All we can do is do the fact finding immediately as soon as we hear about the case. We can meet the survivor, we can meet the family, we can keep visiting her, we can give her support, we can talk to her family, counsel them, take them to the police station, file the case. Maybe the best last we can actually get that first level of compensation which is supposed to be given under the SCST Act after a lot of fight. हम एक कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक हम एक केस को ले जा सकते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, फैमिली के साथ हम रहेंगे, पूरा काउंसलिंग भी कर सकते हैं, केस तक ले जा सकते हैं, सेक्शंस हम वहां बैठ के फाइट करके कुछ सेक्शंस लगा सकते हैं. मैक्सिमम जो है वो कॉम्पेंसेशन हम पहला कॉम्पेंसेशन हम दिला सकते हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि आफ्टर दैट व्हाट, उसके बाद क्या? बिकॉज तब तक और 4-5 केस ऑलरेडी आ गए होंगे, वहां पर भागना पड़ेगा, यहाँ पर ये क्या होगा? आई थिंक दैट इज टुडे one of the biggest challenges which Dalit women's organizations and movements are facing. How do we continue to take forward these cases of violence till the last end? What is it that an activist organization can play? What is the role? What is it that I don't know, legal services authorities can play? I don't know. What is it that organizations like legal organizations like HRLN and other organizations, what role they are going to play? But really we need to find a way in taking forward these cases right up to the end and making sure that full justice is brought to that case, and that justice not just in terms of the compensation or getting the accused behind bars, but how is it that we'll make sure that that girl and that family is again back on track? We have so many experiences which we can share, that all efforts, like every effort, maybe like thousands of voices, street protests, everything, but still ultimately we are not able to move forward. So I would just want to give one of my recommendation from my experience, that let us work together to build a strong linkage between the movements, the activist organizations and legal organizations, so that we can really help and sustain this process. Finally, I'll just end by saying one last thing, is that if there is any way to build 1 or 2 or 3 model cases in this country, like for example, we've been talking a lot about Section 4 of the SCST Prevention of Atrocities Act. Can we have like one case at least strongly which we follow till the end, actually catch those officers and highlight this everywhere, that this is what is going to happen. So at least as a network and as all the women's rights organizations together, we can use that model case to show that this is how we'll break the barriers to justice. My time is over, but definitely if there are more questions, we can always discuss later. Thank you very much. नमस्कार साथियों और जिंदाबाद। मैं कल से यहाँ पे हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि जो हमारी जो बहनें हैं जिनके साथ एसिड अटैक हुआ है, वो किस बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने आप को रख रही हैं। तो देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत हिम्मत भी आई। और जैसा कि आज हम लोग बात कर रहे हैं दलित महिलाओं के साथ जो होने वाली हिंसा है उसके ऊपर, तो मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम क्रांति है, जलसाज से हूँ मैं, मध्य प्रदेश से। जलसाज संस्था जो है वो दलित अत्याचारों के मामले में 2002-03 से काम करती है ये, जिसके अंतर्गत सबसे पहला हमारा जो काम था वो राष्ट्रीय गरिमा अभियान के अंतर्गत महिला ढूंढने की प्रथा समाप्ति के लिए हम लोग काम कर रहे थे। जब वाल्मीकि समाज के साथ हमारा काम शुरू हुआ तो उसी दौरान हमें दलित अत्याचार के छुआछूत के मुद्दे भी निकल के सामने आने लगे। तो उस समय हम ये तो नहीं कर सकते कि नहीं हम सिर्फ महिला ढूंढने की प्रथा समाप्ति के लिए बात करेंगे, हम छुआछूत या भेदभाव या अत्याचार अगर हो रहा है तो हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं कह सकते।
तो वो जो मुद्दे निकल के आते थे, उन मुद्दों को लेके जब हम थाने में जाते थे, हमें सिर्फ उस समय इतना ही आता था कि कोई अगर मामला बनता है तो पास में जो थाना है वहाँ पे चले जाओ, उनको बता दो कि ऐसा ऐसा हुआ है। उस समय स्थिति नहीं पता थी कि वास्तव में थाने में होता क्या है। हम चले जाते थे लेकिन होता कुछ नहीं था। एप्लीकेशन, उन्होंने बोला एप्लीकेशन लिख के दे दो, एप्लीकेशन दे दी हमने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो धीरे धीरे उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, मैं ये बात नहीं बताऊँ आपको कि मध्य प्रदेश जो है वो दलित अत्याचार के मामले में हाईएस्ट है या महिला अत्याचार के मामले में हाईएस्ट है, तो गलत होगा। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के साथ अत्याचार वाले मामले हमें देखने में आए हैं, जिसके 600 के लगभग केस जिसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं। महिला अत्याचार के मामले हैं, अगर रेप के मामले अगर हम बोले उसमें तो 350 के लगभग मामले हमारे पास ऐसे हैं जिसमें रेप हुआ है। उन महिलाओं के साथ हम लोग कानूनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार के केसेस हमको देखने में आए हैं। लेकिन ये कि हम जिस समाज के साथ खड़े हो रहे हैं उस समाज के साथ उसके पास है क्या? ना तो उसके पास एजुकेशन है, ना तो उसके पास पॉलिटिकल पावर है, ना ही उसके पास इकोनॉमिक कुछ है। लेकिन है तो क्या है तो कानून है। और कानून सबसे बड़ा है हमारे देश में। कानून को ऊपर रख के हम हर चीज से लड़ाई लड़ सकते हैं। हम नहीं बोल सकते जिनके साथ हम खड़े हो रहे हैं कि नहीं आप पढ़े लिखे नहीं हो, ये हमारे लिए नहीं है, वो खुद ही हमसे पहले पीछे होंगे वो कि हम कैसे इनके खिलाफ लड़ सकते हैं। गांव में अगर किसी दलित के साथ अत्याचार होता है या किसी महिला के साथ कोई रेप की घटना होती है तो वो उस गाँव के दबंग के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन हम उन्हें बताते हैं कि हमारे देश में जो है सबसे सर्वोच्च स्तर पे जो है वो कानून है, और कानून से बाहर कोई नहीं है। आज अगर बड़े बड़े नेता है, अभिनेता भी जेल के अंदर है, क्या उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं था? क्या उनके पास इकोनॉमिक उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो अपनी सजा को खत्म कर सकते? लेकिन वो जेल के अंदर है। इसलिए जेल के अंदर है कि कानून से बाहर कुछ नहीं होता है। तो हम लोगों ने सबसे मेन जो स्ट्रेटेजी बनाई वो ये कि हम कोई से भी लड़ाई लड़ेंगे, हम कानून के साथ लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? हमारे देश की सरकार ने हमें कानून दिया है, सबसे पहले हमें संविधान दिया है, कानून है और उन लोगों के लिए अधिकार भी है। तो बस इन्हीं तीनों चीजों को हमको हथियार बना के और लड़ाई लड़ना है। कैसे? कानून अगर है और उस कानून का उल्लंघन हो रहा है, एक व्यक्ति है और उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो क्या हम कानून के तहत उसको न्याय नहीं दिलवा सकते? बिल्कुल दिलवा सकते हैं। हम अगर किसी अधिकारी के पास किसी विभाग में जाके खड़े होते हैं तो हम किस हैसियत से उससे बात करेंगे? हम बोल देंगे कि हाँ हम इस देश के नागरिक हैं, हम भी समाज का हिस्सा है, इस नाते हम लोग यहाँ बोलने आए। लेकिन हम ये बात भी बोल सकते हैं कि हमारे देश के कानून में ये लिखा है, आपकी ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये चीज करना चाहिए। जब हम उसको उसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं तो वो काम करता है ना। तो सिर्फ इसी चीज को हमने मेन हथियार बनाया कि हमारी सुनेगा कौन और कैसे सुनेगा? तो हमारी बात सुनेगा कानून, और कानून के तहत ही हमें हमारे काम सारे करवाने हैं। तो इसी को लेके मध्य प्रदेश में जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो 2006-07 से हम लोगों ने बिल्कुल सघन रूप से काम करना उस पर शुरू किया। तो इसमें जो हमारी स्ट्रेटेजी थी कि कैसे काम किया कैसे जाएगा। कोई एक केस आता जाएगा, हम लोग लड़ते जाएंगे, कोई केस आएगा, जैसा जी ने बताया आशा जी ने कि केस आया, हम गए, तब तक फिर 3 और नए केस आ जाते हैं। फिर उन 3 नए केस का क्या, या वो केस जब आगे बढ़ेगा तो बाद में उस केस में क्या होगा। तो इसको हम लोगों ने 3 हमारी स्ट्रेटेजीज में अपनाई है कि एक तो अगर कोई मामला आता है हमारे सामने तो फर्स्ट एड है ना, फर्स्ट एड क्या होना चाहिए उसके अंदर। सेकेंडरी जब वो कोर्ट में जाता है तब हमें उस केस में क्या करना चाहिए, और थर्ड जब वो केस में सारा ट्रायल खत्म हो जाता है, डिसीजन नहीं आता उस समय क्या। तो हम जिस समाज के लिए बात करते हैं, जिस समाज के मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं, या अगर उस गांव की महिला का मुद्दा हमने उठाया है तो सबसे पहले हमें जरूरत रहती है कि उस व्यक्ति को विश्वास मिले, उस महिला को विश्वास मिले कि आप ये लड़ाई जीत सकती हो, आपको न्याय मिल सकता है अगर आपके साथ गलत हुआ है, अत्याचार हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें उसको तैयार करना पड़ता है। तैयारी शब्द गलत है, लेकिन फिर भी एक भरोसा दिलवाना पड़ता है। जैसा मैंने बताया ना कि उनके पास कुछ नहीं है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सब तब से वो अपने आप को कम ही समझते हैं, कमजोर ही समझते हैं। तो तब हम उनको वहाँ बताते हैं कि आप कानून का सहारा लेके हम आपको न्याय दिलवाने में पूरी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा कोई अगर केस आता है तो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन भले को किसी भी माध्यम से आए, उसके बाद उस पीड़ित को उस लड़ाई के लिए तैयार करना है। क्योंकि ये लड़ाई कोई 1 या 2 महीने में खत्म नहीं होती है, साल भर में खत्म नहीं होती है। ये केस चलता है 2 साल, 3 साल, 4 साल। और ऐसा भी केस हमारे पास आए हैं जो हमने सबसे शुरू में उठाया था, उसका डिसीजन अभी मार्च में हम लोग को मिला है। तो 7-8 सालों में भी डिसीजन हमारे पास आए हैं। और ऐसे समय में उस व्यक्ति को लेके चलना वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पेशेंस भी रखना पड़ता है।
इतने साल तक के कोई कैसे इंतजार करेगा कि हमें न्याय मिलेगा या